the recording first. And I'm going to share my screen. Okay, can you see my screen? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप अपने मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप। Okay, okay, done. Okay. So, first of all, kids, we have to remove our sprite and we have to select the sprite for our game. So the sprite for our third game is chick. So we'll select on the choose a sprite and then we'll search for the chick from here. You can select any of the character for jumping. Okay, so you will have a character on the stage that will jump the obstacles. हमारी इस गेम में हमने करना क्या है कि हमारे पास एक कैरेक्टर होगा और उसके सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ओके, सो उन ऑब्स्टेकल्स को जंप करना है उस कैरेक्टर ने, और अगर वो कैरेक्टर उन ऑब्स्टेकल्स के साथ हिट कर जाएगा तो फिर हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। ओके, सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चिक स्प्राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। चिक, दिस वन, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, चिक। Okay, so first thing, we have selected the sprite chick. It's loading. So here we go. Here we have the chick sprite. Now, next thing is we have to select a backdrop. Okay, we have to select a backdrop and we'll choose a backdrop from here. And I'll select the backdrop blue sky. You can select of your choice as well. So I'll select the blue sky. Okay, so the backdrop has been selected. My sprite has been selected. Now we have to place the chick at the starting point. So I have dragged it and place it over here. So इसको हमने यहाँ पर इस जगह पे प्लेस कर दिया है। Okay, so first thing is we have to make our chick jump. सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने चिक को हमने, अपने स्प्राइट को हमने जंप करना है। तो इसको हम जंप कैसे करेंगे, इसके लिए ब्लॉक हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं वो है हमारे पास चेंज वाई बाय। ओके, इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ, चेंज वाई बाय 10। इसको अगर मैं अब क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो चिक मेरा क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, अब मैं चाहता ये हूँ कि ये ऊपर जाए और एक पोजीशन से फिर दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाए। तो नीचे कैसे आएगा, मैं यहाँ पर नेगेटिव अगर मैं वैल्यू दे दूंगा तो फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ देन इट विल कम्स डाउन। ओके, तो अब मुझे इसी ब्लॉक को यूज करना है कॉन्टिन्यूसली, ताकि मेरा चिक जो है वो पहले ऊपर जाए और देन फिर नीचे आए एक ही स्टेप में। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल्स में, और कंट्रोल में हमारे पास एक ब्लॉक है रिपीट 10, दिस वन, रिपीट 10। ये ब्लॉक मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। ओके, और इस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं पुट कर दूंगा चेंज वाई बाय, और मैं यहाँ पर कहूंगा चेंज वाई बाय 10। अब रिपीट 10 क्या करता है बेटा, ये एक लूप है, दिस इज कॉल्ड द लूप।
जो क्या करेगा, जो हमने ब्लॉक यहाँ पर पुट किया है इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, इसको 10 टाइम्स चलाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है, मेरा चिक जो है वो एक हाइट पर चला गया है। अब दूसरा मुझे क्या करना है, उस हाइट पर जाने के बाद मैंने इसको चिक को वापस लेके आना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको करूंगा डुप्लीकेट, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे डुप्लीकेट और इसको लाके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब ये आप देखें कि ये 2 टाइम्स चला है, तो ये क्या हो गया, ये 10 टाइम्स ये रिपीट हुआ और 10 टाइम्स ये रिपीट हुआ, तो वाई में चेंज हो गए, ये हमारा चिक इस जगह पे पहुंच गया। इसको हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं जहां पे हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम ये ऊपर जाए, देन ये इसको हमने नीचे लेके आना है, तो विल पुट -10 ओवर हियर। ओके, हम यहाँ पर -10 रख देंगे। अब आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें क्या होता है। ओके, एक दफा क्लिक करेंगे तो हमारा स्प्राइट जो है ये जंप करेगा। ओके, हमारा स्प्राइट जो है वो जंप करेगा, लेकिन अब इसको हमने क्लिक करने के साथ तो नहीं हमने रखना, हम इसको रखना चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूं तो ये जंप करे। तो उसके लिए क्या करना है आप जानते हैं, वी हैव टू गो टू इवेंट्स एंड वी विल पिक व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। हम इसको ले आएंगे यहाँ पर और ये हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो मेरा चिक क्या करेगा, जंप करेगा। स्पेस की प्रेस की, जंप कर रहा है, स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, जंप कर रहा है। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल select the chick, select the backdrop, then use the change y by block and put it inside the done. Very good, Hamza, excellent. हमजा ने डन कर लिया जी। ओके, बेटा कम ऑन, शाबाश। You have to select the chick and then a backdrop and then use the block change y by 10 and put it inside the repeat 10 block from the controls. Done, Umar Iftikhar done, Mohib done, good. Huzefa done, okay, good job. Yes, beta, jaldi se, shabash. I am waiting for your replies. Yes, come on. अभी तक मुझे 4 मैसेजेस आए हैं। मोहिब डन, ओके, मोहिब का डन हो गया जी। बाकी स्टूडेंट्स, इनफिनिक्स ओके डन। Yes, what about others? Fatma? Yes, Fatma and Tahamul. I'm waiting for you.
Fatma, can you hear me, Fatma? जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए. Come on. Okay. Now we have to select the another sprite for the obstacle. So हमें एक obstacle जो है वो मूव करना है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्प्राइट लेके आएंगे ऑब्स्टेकल्स, और वो क्या होगा, हम सर्च करते हैं यहाँ पर एग. आई एम गोइंग टू सर्च फॉर एग. यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एग. ओके, और ये हमारे पास स्प्राइट आ गया है. इसको सेलेक्ट किया. It's loading now. Okay, so we have the sprite egg that is loading. Fatma done. Okay, Tahamul, good job. Okay, we have now another sprite that is the egg. Okay, so first of all, we have to reduce its size. So its size is much bigger than the chick, so we have to reduce its size to 70. Okay, so that chick can easily jump over it. So we have to put it at the starting point. So this is our starting point. Okay, so we want to appear the egg from here, and it should glide towards the chick at the left boundary of the stage. So what we'll do, we will put first of all green flag, click for it. When we click on green flag, so it will start moving the egg until our game is running. Okay, so we have put the forever block, and over here we will put the block to move our egg back to it. So that is the starting point. So what is the starting point? That is the x 231 and y negative 140. So we will move to the motion, and over here we'll pick the block, go to x, y. Okay, we'll pick this block and put it over here. So this is a starting point of our egg. Okay, now you want to move it towards the chick. So it's pretty simple. What we'll do, we'll use this block, glide 1 second. We'll pick and put it over here. And here we say glide. So if we click on this one, so you can see now, so it will not glide at the moment. So the reason is we have said glides x 231. So 231 is the current position. So we have to move it over here. Let's say we have to say it should move to this one. It should glide to this position. So this is negative 233. So we'll put x over here. We say 233. Okay, so now when I click on green flag, you can see the egg is moving towards the chick. So, but it's pretty fast. So how we can make it slow? Very simple. We'll just increase the time over here. हम यहाँ पर टाइम इंक्रीज कर देंगे. ये 1 सेकंड है, हम इसको कह देंगे, लेट्स से हम कहते हैं इसको 3 सेकंड्स.
we'll put 3 seconds over here. So now we'll check. So that now egg is moving at medium type speed. Okay. So now the egg is moving from the right to the left. Okay, come on, students, it's your turn to put the code. First of all, check, load the egg sprite, reduce its size to 70, and then put this code for it. Done. Okay, Mohit, Hamza, excellent. Good job. Okay, guys, I am waiting for you. Please come on. Umar. Okay, good. Huzefa Sultan, done. Great. Tahamul, okay, done. Hamza, okay. Infinix is asking, sir, what is code for chick? So Infinix, okay, here is the code for chick. This is the code for chick. We have to put when space key pressed, and then we have used the repeat blocks twice. Repeat 10 times. That will comes from the control. ठीक है, रिपीट एक लूप है, इसमें हम यहाँ पर जितना भी अमाउंट बताएंगे उतने टाइम्स ये जो ब्लॉक इसमें हम पुट करेंगे वो उतने टाइम्स यहाँ पर रिपीट होंगे. ओके, सो हमने यहाँ पर चेंज y बाय पॉजिटिव 10 पुट किया है, सो इट विल मेक जंप. यस, कम ऑन. Tahammul, Hamza, done. Okay. Aisha, sorry, yeah. Fatma and Aiza. I'm waiting for you. Come on, girls. Egg code. Okay, egg code is pretty simple. Here it is. Just we'll put the when green flag clicked and forever. Then we'll say go to X and Y. So that X and Y means that is the starting position of the egg sprite. That is the starting position of egg sprite. यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये गो टू एक्स वाई में वो वैल्यू आएगी, और ग्लाइड में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ वाई में चेंज नहीं होगा, वाई तो सेम रहेगा हमारा, सिर्फ हमारा एक्स में चेंज होगा, एक्स नेगेटिव में आ जाएगा हमारा. ठीक है, एक्स में वैल्यू कौन सी आएगी, जब एग जो है वो क्रॉस कर जाएगा चिक को, तो वैल्यू यहाँ पर एक्स में आएगी. ओके, okay. Okay, students, now we will play our game. We click on the green flag and we will make our chick jump. But if our chick touches the egg, nothing happened.
चिक जब एग के साथ टच कर रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कोई कोड तो यहाँ पर सर्च कोड डिलीटेड। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने कोड लगाना है कि चिक जब एग के साथ टच करे तो फिर क्या होगा, गेम हमारी ओवर होगी। और वो हम कोड कहाँ पे लगाएंगे? चिक पे लगाएंगे। सो अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द इवेंट्स एंड वी पुट द ग्रीन फ्लैग क्लिक। जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा ये कोड स्टार्ट होगा। ओके, और सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द we'll move to the motion and we'll say go to XY. Whenever game starts, it should set the starting position of the chick. So what is the starting position of the chick? So that is negative, X is negative 190 and Y is negative 123. So we have put that over here. Okay, so after that, we have to show the chick blocks. So it's showing now. Tahammul. जी बेटा, तो जैसे हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें तो हमारा चिक जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए। ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द कंडीशन फॉर टचिंग द एग। ओके, सो we have to put that condition inside the forever, so it's continuously going to check that the chick has touched the egg or not. So first of all we will put the forever, and then inside the forever we'll say we'll put the if condition, and over here we will use the block touching. Very simple. We'll move to the sensing and we'll pick this block touching mouse pointer and we'll put it over here, and we'll say we'll select the egg from here. If touching egg, then what we have to do, we have to stop our game. Okay, so we'll move to the controls and we'll say stop all. Scroll down and put the block stop all. Okay, so now you can check. Now I'm going to click on the green flag and my game is going to start, and it's, oh, if it touches, so that will stop my game. Okay, if it touches, my game will be stopped. Oh, okay, so now my game is working. So come on, put this task, complete this task, put the code to stop the game if the chick touches the egg. Mohib Khan done. Okay, good. So you want to see the egg? Here is the egg code. Very simple. सिर्फ दो ब्लॉक्स है हमारे पास, ग्रीन फ्लैग क्लिक फॉरएवर, उसके बाद हमारे पास गो टू XY और उसमें ग्लाइड ब्लॉक। Yes, come on. When you have done, please tell me. Done. Okay, Hamza, good. Hamza, Umar Iftikhar, done. Good. Mohib, done. Okay. Yes, come on. Sir, egg code.
Okay, so egg code is over here. Here is the egg code. Okay. So next, what we have to do? We have to add more functionality in this game now. At the moment, we have only just one obstacle, that is the one egg over here. So we have to add another egg so that we have to make it just a little tough. So how we can add another egg? Simply, we will right click and we'll right click on what? On egg. We will right click on egg and we'll say duplicate. When we say duplicate, it will create the copy of the egg and also the script as well. We have already written the code for egg 2 and we have egg 2 sprite over here. Okay, now we have 3 sprites: egg sprite, egg 2 sprite, and the chick sprite. Okay, so we have to make some adjustments with the egg 2 sprites. So if we run at the moment, if we run this code, so let's see what happens. There is only one egg we can see. Why? The reason is we have the same positions and the same timing for both of the eggs. Okay, so both of the eggs are moving at the same speed from the same point. So that's why we are not getting the 2 different eggs. So what we have to do is we have to make a little delay in start of the second egg, that is the egg 2. We have to make a little delay before starting that egg. Okay, so for that, we will put the delay over here. So how we can put the delay? It's pretty simple. So we'll go to the controls and we'll pick the wait block and put it before the forever. On the egg 2, we will put it on before forever. Okay, so what is put? We will put the time. Let's say we will wait for 1.5 seconds. So the total glide time is 3 seconds. So I'm going to put the 1.5 seconds so that the first egg that will reach at the bottom, so then it will start moving the second egg. Okay, so we have to say wait 1.5 seconds over here. So when I click now on green flag, so let's see what happens. But my game stops at the first. Okay. 1, 2, 3. Oh, okay. Okay, now we are getting one problem over here. So when we are starting, you can see when I'm clicking on the green flag, this egg is displaying over here. Okay, so we don't want to display it over here. So when you click on the green flag, that should be disappeared from here. So that should be disappeared from the stage. So how we can do that? You know already that block, that is the hide block. We will put the hide block over here. Here we have the hide block. You click on the sound, so you get the hide block easily. It's not over here. Okay, I'll put the hide block before the wait. Okay, I'll put the hide block before wait. Our sprite should be hidden
and then after the wait, we'll show it. Okay, we'll click on show. We'll select the show. So it will show the sprite. But before hiding the sprite, we will also move our sprite to the starting point as well. Okay, we'll just duplicate this block from here. We'll say duplicate, and we don't need this one. So we'll remove this block from here, and I'll put this block. So when I click on the green flag, it should move to the starting point. Okay. So now I'm going to check my game again. I'm going to click on green flag. Moving, jumping, jumping. But okay, now you can see this second egg, the egg 2. When it touches the chick, our game is not stopping, it's continuing. Okay, so we have to tackle that condition now. Okay, come on, guys. Please complete this task. You have to duplicate the egg and put this, the code will also be duplicated automatically, but you have to put these 4 blocks over here. Go to X, Y, hide, wait 1.5 and show. Yes, come on. Done. Okay, okay, done. We done Hamza. It Hamza. Okay, Hamza, brilliant. Josefa, good. Okay, so Minal Zahra is now joining. Umar Iftikhar, done. Great. Tahamul, done. Okay, guys. Today is your homework. Today you have to do a homework. You have to put the condition. Now think about that problem. The problem is when our game is running and it is sensing the first egg, but the second egg is not sensed by the chick. हमारा जो egg 2 है, इसको chick sense नहीं कर रहा है. इसको भी sense करना चाहिए. It is just sensing the egg. Okay. अब आपकी असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, आपने इसके बारे में सोचना है कि आप क्या करें ऐसा कि ये egg 2 को भी सेंस करें. उसके लिए आपने कोड लगाना है. वो कोड कहाँ लगाना है, वो अब आपने सोचना है कि वो कहाँ पे लगना चाहिए. और इसको कंप्लीट करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में शेयर करना है. ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क. अंडरस्टैंड? अब हमारे पास 2 एग्स ऑब्स्टेकल्स हैं. एग जो पहले हमने लगाया था उसकी कंडीशन हमने लगाई हुई है सेंसिंग की. वो कहाँ पे लगी हुई है बेटा? ये यहाँ पे लगी हुई है. ठीक है, लेकिन एग 2 की सेंसिंग की कंडीशन कोई भी नहीं है हमारे पास. आपने एग 2 के लिए सेंसिंग की कंडीशन लगानी है. वो कहाँ लगाएंगे आप? वो आपने अब लगानी है, और जब उसको कंप्लीट करके आपने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है. ओके. Fatma and Aiza has raised hands. Okay. Yes, unmute yourself, Fatma. What is your question? Yes, beta. Fatma, I can't hear you, please. Fatma, please ask me in the chat box so that I will reply. I can't hear you.
So can you repeat that? What is our homework? Okay, Mohit, your homework is, beta, when we play the game, okay, I'm going to play. It is sensing the first egg, but it is not sensing the second egg, okay? This is your homework. You have to add the sensing for the second egg. Our game is not stopping when the chick touching the second egg, egg 2, okay? So you have to put the code for that. This is your homework. Okay, Mohib, you have got it. That's good. Okay, Fatma, you can ask me, sir, your voice is hanging. Is there any problem with, is there the same problem with anyone? क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Aisha is not getting the voice. Okay, Hamza, you are not, you have also the problem, same problem. So your voice hangs sometimes. Okay. Minal. Yes, Minal. Unmute yourself. You have joined late, I think. So our. Yes, I have joined late. Okay. So can you explain me again?